चल 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 चल। स्ट्रीम के लिए स्ट्रीम। अरे भाई आज की स्ट्रीम तो करनी ही थी। वेलकम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। यो गोली यो भाई यो। बस स्ट्रीम के लिए स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं बस लाइक आई एम अलाइव। यूट्यूब के एल्गोरिदम में जिंदा रहना पड़ेगा भाई। और बताओ भाई मार्शमेलो भाई क्या हाल है भाई? आज मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ, फ्री नहीं था, अदरवाइज मैं दिन में करता स्ट्रीम। लाइक आई वाज आउट। मैंने 3 बजे तो खाना खाया यार आज का, और तो मैं क्या ही बोलूं, इतना बिजी था मैं आज। 3 बजे ब्रेकफास्ट करा मैं। ओके मेरे पास ये होगा ना। यप, मुझे स्टाफ ऑफ होमा मिल गया गोली भैया। क्या बात है, कितने पीटी? हाउ मच पीटी? कमाल कर दिया वैसे भाई। स्टाफ ऑफ होमा, नाइस। ओए ये बताओ, कोई गेम की ऑडियो कट रही है क्या आज भी? नहीं, चलो सही है फिर। कितनी देर में स्टार्ट हो रहा है? 10 मिनट बाकी हैं भाई, 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, तो तब तक बताओ क्या करें? डेलीज करके आऊं? छोड़ो वो छोड़ो, ये करते हैं। किधर गया? सबसे पहले वाला यहाँ से ट्राई करते हैं। स्टार्ट। C2 नायदा निकाल। पागल वागल है क्या? दोस्त दोस्त ना रहा, टकला टकला ना रहा, तो साले सदा टकला दौड़ी रहूंगा मैं। कुत्ते बाय द वे, वेलकम वेलकम टू दिस स्ट्रीम। आई आदि मैं आया 2 मिनट। 49 पीटी सही है भाई। असली स्ट्रीमर्स लग तो तेरा चल रहा है। नहीं है, वहां पे मिल गया मेरे को। जस्ट मेरे को चेंज करनी पड़ेगी पार्टी। ये क्या पार्टी लेके घूम रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड। कल लक तो थोड़ा सा मेरा भी चला, बट मिला गया। आई वॉन्ट बट एट व्हाट कॉस्ट? चीची चीची मिली है मेरे को। भी गया असली वाला। अबे साले असली वाला है, अभी कहाँ से लाऊंगा मैं? इतना भी वो नहीं करता मैं। जो है सच है, अदरवाइज कुछ नहीं है। डैम, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, थोड़ा रेस्ट कर। चल इतना ही जल्दी है तेरे को, चढ़ जा ऊपर, चढ़ ऊपर। हाँ जिंगल लाला हूँ, गाना गा लियो तू, जिंगल लाला हूँ। टिप्स दे दो सर जी। इतने जल्दी बाल आ गए मेरे? जल्दी बाल आते साले। मैं तो चला जिम जाने। अबे साले वो देख के जाइयो, लाइव स्ट्रीमिंग देखनी तेरे को। 5.2 का है, 5.2 लाइव स्ट्रीम नहीं देखेगा गेंशिन की साले? बाद में जाइयो जिम। जिम इज फॉर वीक्स। खेत में जा, खेत में मजदूरी कर। ये कौन सा डांस था? जिंगा लाला वाला। ऐसा ही होता ना, वो नीचे करते हैं, एक नीचे करते हैं फिर ऊपर करते हैं, कुछ तो करते होंगे भाई। आई डोंट नो। मैं कौन सा जंगली? मेरे
मेरे को थोड़ी पता है, मैं उनका कोई रिश्तेदार थोड़ी। तो मुझे पता होगा। इधर आओ तुम लोग, बड़ी ये जगह लेके बैठे हैं। अरे सालो, something with which to commemorate this occasion. ना माने ना माने ना माने है? हो गया खुश। ले भाई, लाइक भी कर दिया, धन्यवाद भाई। आज 5 की स्ट्रीम, अरे तो वो थी ना, स्ट्रीम थी ना 5.2 की, इसलिए बोले भैया 49 पे मिल गया हूँ। हाँ हाँ देखा ना, देखा। नाइस भाई, असली स्ट्रीमर्स वक्त तो तेरा चल रहा है। खेत में तू डांस कर, बंदर बंदर की माँ तेरे को उसका बंदर समझ के तुझे उठा ले। साले गोरिल्ला चाहिए होगा, गोरिल्ला की माँ समझ के उठा सकती है मुझे बच्चा। साले इतना बड़ा जानवर है, कोई बच्चा समझेगा क्या? ले भाई, धन्यवाद। हेलो हेलो, गद्दारी कर पे। क्या हो गया भाई? उस भाई वेलकम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है? 6 मिनट है लाइव में। कोई नहीं, मैं देख ही रहा हूँ, वो भी देख ही रहा हूँ, साथ के साथ चलते। मैं उस तरफ भी ध्यान दे के रखा हूँ। चैट नहीं आ रही क्या? मेरे ट्यूशन टीचर ने टेक्निकल गुरुजी को बुलाया अच्छे बच्चों को रिवॉर्ड देने के देने जिनके फुल मार्क्स आए हैं, उसमें मैं भी हूँ। सही है भाई, करनाल एकदम अमीरों का शहर है ना, क्या ही कर सकते हैं। ऊपर से भाई सीए तो भाई होगा ही ना, मतलब क्या ही 1-2 करोड़ ही लिए होंगे उसने आने के, इससे ज्यादा क्या ही लेगा वो। 40 पीटी में C2 नायदा मिल गई साले। इमेजिनेरियम थिएटर भाई, वाह वाह भाई वाह। ओ भाई सॉरी यार, सॉरी 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 भाई। मैं कल मैंने स्ट्रीम की थी, बट कल तुम आए नहीं, कल मेरे को पता भी नहीं भाई। मैं बोला था अगर किसी का आया तो यार बताओ, मेरे को याद नहीं आया, सॉरी भाई। आज करता हूँ फिर, मैं तुझको गोरिल्ला समझ रहा है क्या? एल रे, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, वेलकम वेलकम। यू डूइंग? An impressive bounty. चलो वी गो चेस्ट हंटिंग। थिएटर का कुछ आया है क्या नए वाला? थिएटर का नया, हाँ थिएटर वो है ना, रीसेट हुआ है। ओए गलत आ गया इधर है। Everlasting as the moon. डैम, चलो दो भाई नेक्स्ट चेस्ट। ऐसे मत करो भाई, यहाँ पे और चेस्ट हैं, तुम झूठ बोल रहे हो सालों, झूठ मत बोलो। यो ऋषि भाई, यो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। नूर महल में कल 3 बजे इनविटेशन पास मिले, सिर्फ डीसी क्लासेस हैं। ये साला मरा नहीं, ये क्या था? मरा क्यों नहीं ये साला? डैम। चलो, गोली लाइव स्ट्रीम नहीं देखेगा? गोली लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं देखेगा भाई? लाइव स्ट्रीम देखेंगे तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ, अभी टाइम है उसमें, मैंने लगा रखा है बैकग्राउंड में प्रीमियर्स इन 3 मिनट्स। चलो उसकी तब तक मैं ऑडियो भी लगा ही देता हूँ तुम लोगों के लिए। ये रहा विंडो एंड ये लो, हो गया। अब आई गेस जब वो होगा स्टार्ट तब पता चल जाएगा। मेरा कर दो भाई। अरे अभी लाइव स्ट्रीम होने वाली है, उसके बाद करता हूँ। बोर्डिंग लगता था, मतलब बोर्डिंग लगता था, लेट लेट लेट। ले भाई, आरले का बस वेस्टेड भाई। हेल्थ हेल्थ रीजन करनी थी, ठीक है, मेरे को पता है भाई। मेरा कर दो भाई। इमेजिनेरियम थिएटर के बाद करता हूँ। मैं सही टाइम पर आया, तू लेट है, नल्ला सॉरी बोल। चल के बी के एल सॉरी बट नॉट सॉरी। चल मेरी नाहिदा निकल गई। कितनी पीटी ऋषि भाई, चैट पढ़ लिया कर। अबे साली चैट पढ़ता हूँ भाई, पता लाऊं कुछ। मैं तो उनके सोने के फोन में डायमंड का कवर चुराने का सोच रहा। आपके पीछे वाला ब्लू पहाड़ असली है? हाँ, मैं पहाड़ों में बैठ के स्ट्रीम कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? लाइक मैंने संन्यास ले लिया है। 50 पेटी
डैम, ये सही है, मैं गया थोड़ा कुछ खा के। ओके ओके ओके, 2 minutes more for stream। वह नहीं आ जाएगी, स्ट्रीम स्टार्ट ही होने वाली है तो कितना कहाँ ही जाएगी स्ट्रीम स्टार्ट होके, भाग थोड़ी जाएगी। तब तक एक दो चेस्ट और उठा लूं मैं। ओए ये कहाँ चेस्ट है? हेलो 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 इंकिल, चेस्ट किधर है भाई? ये नीचे दिखा रहा। अब ये गेम मेरे को फुद्दू बना रही है फिर क्या सीन है भाई? नीचे कौन सी चेस्ट है यहाँ? चेस्ट है, पता है क्या इसको? कपड़े निकालो, सन्यासी कपड़े नहीं पहनते। भाई अगोरी नहीं हूं मैं, ठीक है? निवस्त्र नहीं घूमता मैं, नहीं करा माफ जावे। क्या भाई पता था कि तुम पहाड़ी हो? वे साले मारे नहीं हो भाई, पहाड़ी घंटा नहीं हूं। चलो भाई वो उस पे चलते हैं। Here we go। चलो गेम स्टार्ट होने वाली है, वैसे भी कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। वी गुड द सेम हेयर स्टाइल, सही है। ड्रैग फॉलो कर रहा है। पहले मैं हॉरर गया था पर निकल गई। मतलब पहले 50-50 लूज करा, फिर उसके बाद 50 पीटी में तेरे को ये मिला। नाइस। ये क्या लंग है बे? जुबा जुबा, ये क्या लंग मतलब? मैं समझा नहीं। सॉरी कर दिया केजा। कुछ भाई एक सेकंड। ओके बी बैक। हाँ एक तेरी चैट कौन सी चैट थी? अगले वीकेंड ट्यूशन के ट्रिप के साथ शिमला, उसके अगले वीकेंड स्कूल के ट्रिप्स के साथ जयपुर एंड दिसंबर में केरला का स्ट्रीम स्कूल की तरफ से। बोले राजस्थानी नहीं था, मैं बंगाली था साले। चलो भाई हो गया, स्टार्ट हो गया। मुझे स्टाइल ही चाहिए। स्टाइल का वैसे ये जो बैनर दे रखा था भाई मस्त लग रहा था दिखने में, मतलब कि जो बीच में इन्होंने थंबनेल लगाया था। चलो भाई हो गया स्टार्ट। मैं म्यूट होता हो ना, हो जा। We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. So Archon's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, I'll bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. "500 years later, and it's resurfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free! Take me up! Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine! Before the final moment truly arrives,
We must fight harder than ever. भाई साहब मस्त। क्या ये उसको क्या नाम था उसका? अबे क्या नाम था उसका ड्रैगन का? क्या नाम है? पायरो सोवरेन ड्रैगन क्या नाम था उसका यार? कुछ तो था ना, सबुलंका। सबुलंका का भी कुछ है ना, गोल नीचे और गया हमारा। बगजा था ले। वेयर इज मावी का? मावी का नहीं है भाई, कैपिटानो तो दिखाया है इन्होंने। 5.2 में आई गेस वो नहीं है ना, आर्कन क्वेस्ट नहीं है। 5.3 में अब आर्कन क्वेस्ट आई गेस, if I am not wrong. Fourth last chest. तेरी राइट हाथ की सिल्वर की रिंग चुरा लूंगा। चेक देख। क्यों चुराएगा तू? और सिल्वर की नहीं है, लोहे की है वो। Hey travelers, welcome to the GENSHIN Impact version 5.2 special program. Voice actors I'm अभी Gabe भी नहीं from the हुए Welkin. के साथ। And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. I'm not sure what that meant, but it was adorable. ये भी She ठीक है। approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. Whoa, are all cuckoosaurs as friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our cuckoosaur friend kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. Cuckoosaurs live among the Flower Feather Clan, which is suspended high above the mountains. This is a tribe of warriors, and most of their people can command the power of the skies. It was the Flower Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natland. As elite special forces, their job was to detect threats, disseminate intel, and quickly neutralize any dangers to the nation. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Oh, I'm so pumped about these cuckoosaurs. Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. They know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. Okay, so I'm assuming that cuckoosaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. You need to prove yourself in some worthwhile feat, like demonstrating exceptional archery skill during flight. That's the only way to become a true cuckoosaur rider. Wow, that's so strict. Yeah, tell me about it. But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather Clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their saurian companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their cuckoosaurs. What is that item? A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding, ding, ding! Cuckoosaurs live far from the tribe and from each other, so in order to summon them, the tribe's people use whistles and horns to produce loud noises. So there's your overview of cuckoosaurs. Maybe they sound a little unapproachable compared to other saurians, but don't worry, travelers. You get into a tough situation, then Chaska, the Flower Feather Clan's expert peacemaker, can help mediate the conflict. Knitch mentioned that her method of mediation is silencing both parties. Is that true? Well, that's only in special cases. Most of the time, Chaska barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and saurians. She keeps the peace between people, too. Exactly.
Chaska was corrupted by abyssal power as a child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for her, the Kukusaurs took her in and raised her as one of their own. In addition to hunting and flying, Chaska gained a lot of unique combat experience from her Saurian childhood. When Chaska is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. While she's in the Night Soul's Blessing state, Chaska can ride and control her gun like a Kukusaur. The Soul Sniper doesn't just increase her movement speed and resistance to interruption, it also allows her to get a better देखो angle on her जेसी enemies. साहब की DPS दिख रही है ना that भाई mid-air ट्राई तो perspective करूंगा is मैं so इसके लिए cool. It seems मैं so इसी के बैनर पे liberating. पुल करूंगा Yeah. although I am And Chaska's but, fierce when she's in the zone. In the Night Soul's Blessing state, Bhai. Chaska's normal attacks deal animo damage to enemies in front of her. Unleashing a charged attack in this state will cause Chaska to enter a special aiming mode. This allows her to lock onto a set number of enemies within range and fire up to 6 Shadow Hunt shells, which deal इसकी सिर्फ animo ये damage जो upon है ना impact. भाई In addition, for every Pyro, Hydro, Cryo, or Electro character in your party, one of Chaska's Bhai. Shadow Hunt shells will undergo an elemental conversion to deal the corresponding type of elemental damage. Whoa, इसमें किस no बात में way. वजह से मैं So Chaska निकालने can की try directly करूंगा deal other types of elemental damage based on the characters in her party. And since she's an animal character, she can swirl them कर ले at तेरे the को जो same होगा। time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chaska fires a gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals animo damage. The attack then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo elemental conversions. That's so cool. No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn the recognition of a Kukusaur. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its own definition of strength. There's a tacit understanding that the wingless are supposed to be protected हे until they भगवान can fly गंदी by बात नहीं themselves. कर रहा भाई But क्लाउड भाई that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will dare to ask, what if you didn't need a Kukusaur to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. Now, whether that's the right path is for us to discover. Chaska will also be there to help us find the answer. So, be sure to check out Chaska's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything else that you can tell us? Remember how I mentioned that Chaska कुछ was खास raised है by इस पैच पे Kukusaurs? नया मैप है Yeah, ना tell us about it. कोड आ चुका है एक कोड आ Her चुका है Saurian mother will make an दूसरा कोड appearance आएगा in this quest. Even though she's किसी ने लिखा ही joined नहीं है human society, Chaska still goes to visit her Saurian mother on occasion, especially when she needs some help with a tough situation. Oh, so Chaska still has the soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather clan is also the setting for the Archon quest Chapter 5 interlude. All fires fuel the flame. Yeah. The tribe is facing a crisis, and they'll need the traveler's help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather clan suffered the worst of the abyssal contamination during the battle in याद version है याद है 5.1. वो भी It's not करेंगे just अनाउंस the करेंगे human body that can't चिड़िया ने withstand high पाला concentrations of abyssal power. पाला For या most पैदा people, किया it है also damages the mind. Many members of the Flower Feather clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in desperate need of aid. Iansan will be there too. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those in need. The people of Natland really value unity, don't they? No one fights alone. Right. That's one of my favorite things about Natland. Oh, wait. It looks like the captain will also be there. Yes, the captain will also offer help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say. The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring 5.2 में Natland's वो भी तो fighting आना था ना spirit नया remains the top priority.
After all, उसका the war isn't over. क्या नाम है yet. वो? The abyssal contamination is still around, and we have a very important battle ahead. अबे सुनो That वाला land एरिया needs क्या नाम है mental उसका? fortitude more than ever before. The Flower Feather clan is pretty close to the Masters of the Nightwind, where the Ictomosaurs live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Nightwind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the tribe's Wath Ictomosaur Dragon's elder, Spine, हाँ. or one Chicken of the Nepala many है, shamans KFC who can edition. communicate with Tender spirits. breast, juicy I even thighs, heard that the breasts. witch doctors who live there can help cleanse your spirit. Welcome Plus, movie भाई, the welcome to graffiti art the is छोटा really लुटेरा incredible. membership भाई. In Thank you fact, so much भाई. there's something So special बड़े about this 4 one. month. Can you figure Yeah. it out, Thank you travelers? so much, brother. It's kind of tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. Ictomosaurs are known for their wisdom. They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal means. Whoa. Okay. Right. Ictomosaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects to enhance their abilities. Doing so allows them to jump higher, move faster, or even obtain surprising rewards. Ictomosaurs can also extract information from graffiti art to create special objects. Oh, क्या I bet बात? that'll come ये in handy ठीक for है? solving puzzles. Definitely, especially in Tribal Chronicles Mictlan, which will become available ये in अच्छा version था. 5.2. Code where? First The code क्या? first two First acts code feature लिखा ही a नहीं lot मैंने. of intriguing puzzles, so be sure to check them out, travelers. Total Some of तेरा ही them बोला will भाई, require चिंदी the नहीं help बोला. of an Ictomosaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ictomosaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian, I mean. Yes, Auroron can do it too. Like the Ictomosaurs, Auroron has the ability to rise into the air. He also has a keen sense of perception. While charging an aimed shot, Auroron will enter the spirit speaker state, allowing him to ठीक है. extract power from Natlan's graffiti and runes. Speaking of Auroron, I was honestly super surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? Is he really that sweet, though? Just to think about all the sneaking around behind his granny's back. Ah, true. The tribespeople of the Masters of the Nightwind are known for being eccentric. But Auroron really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. I wonder if that extends to his combat abilities. It does. Auroron is a bit different from the Natlan characters we've met so far. He doesn't Jello? need to depend on the Night Soul's Blessing state to gain Night Soul points, and he can maintain the Night Soul's Blessing state even while he's off-field. Ah, that does sound different from the other Natlan characters. So how do his abilities work? Let me start by explaining how Auroron gains Night Soul points. This can happen in multiple ways. For example, Auroron can gain Night Soul points when one of his party members triggers a Night Soul burst. He can also gain them when other party members deal Hydro or Electro attacks to enemies after Auroron unleashes his elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. Yep. वैसे हाँ ये भी And तो ना in combat, when enemies चार take damage वो from क्या नाम है electro डैमेज charged इंक्रीज होने वाला है ना reactions, इनका. or other party members deal Night Soul aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's Blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's Blessing state, and trigger the effect. Exactly. Though वो I should Auroron भी mention अच्छा है that बे. Auroron doesn't need Character. to be on the field to trigger the Hypersense effect. Wait, he can trigger it even while he's off-field? That sounds really useful. Totally. His elemental अरे burst provides ओए a convenient अगर way तूने to वो deal देखा हो तो वो damage and support डाल your दे यहाँ opponent. पे चैट में वो कर देंगे Auroron पिन कर देंगे performs उसको. an ancient reach roll किसी with को his अगर मिला नहीं burst होगा तो. to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up close, the Oculus releases a sound wave to deal damage. That should be great for crowd control. Yes! With Auroron in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier.
And speaking of making things easier, Auroran can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. Awesome. Auroran really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. वो भी ठीक है. Cool. So we introduced two of the upcoming regions in this update, the Flower Feather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Version 5.2 actually introduces another new region. It's called Ochkanatland. Oh, I think we caught a glimpse of this ancient city when we were looking at the Flower Feather Clan. It's really beautiful from far away, but those clouds look kind of ominous. It looks completely abandoned. Is it dangerous? Yes. This is a restricted area in that land due to its severe abyssal contamination, and it seems uninhabited. Over the years, many adventurers have come here in search of treasure or to slay the dragon. Unfortunately, none of them have ever returned. The Flower Feather Clan often sends riders to patrol the area and to prevent people from getting too close. Wait, did you say slay the dragon? Yeah, I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Okay, that's यही pyro dragon है क्या? It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient past. Travelers will need to explore Ochkanatland to uncover the reason behind this dragon's rampage. Of course, travelers won't have to do this alone. Here, take a look. Oh, what's that? This is a very important companion who will help us explore Ochkanatland. His name is Kokoweek. As for his power, well, why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our Tapetlasaur friend out of a job. Little one works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatland is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokoweek comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokoweek has enough power, you can take him to track down the evil dragon. What a useful little guy. I know, right? Now, travelers can explore Ochkanatland with two companions, Kokoweek and Little One. In fact, I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar saurian companions can also help us explore Ochkanatland. For example, with the help of a Koholasaur, we can evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can fish in that land? Yes, but I've got some friendly advice, travelers. You should be very careful while exploring Ochkanatland. Some of the abyssal monsters here can distort their appearance to mimic powerful enemies. High-level monsters such as the Tenebrous Papilla can mimic even stronger enemies. Huh? It looks like these monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The Abyss has corroded Natland's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside of them and mimic creatures from Tevat. How do we defeat them? Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void wards. Doing so allows them to take damage and causes them to enter a brief state of confusion. Night Soul-aligned elemental attacks are especially effective against these wards. Wow, the Abyss has gotten so advanced. It's scary to think about how much harder these fights will get if these abyssal monsters continue to evolve. Yeah. Okay, that was a lot of information to take in at once. But before we take our first break, we still have a couple of short announcements. Really short, I promise. First up, limited time exploration rewards will be available in version 5.2. But just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra Primo Gems, and the rewards will be available all the way through version 5.3.
It's now time to introduce the event wishes. In the first Chalo. half of version 5.2, travelers can look forward to event wishes from Chaska and Lenny. Auroron will also receive a drop rate boost. And in the second half of version 5.2, we'll have returning event wishes for Zhongli and New Roulette. The weapon banner will feature a new 5-star bow, Astral Vulture's Crimson Plumage, and 2 new Natlan specific 4-star weapons. Be sure to check them out if you're interested. Alright, it's time for our first break. Once we come back, we'll dive right into the event portion. भाई साहब लो भाई दूसरा इवेंट लिख लो यार लेने के GIT2 देखते हैं साले तू कहां से कॉपी करके आ रहा है चेक द वीडियो भाई अपनी पल उसको खुद छोटा कर स्ट्रीम मतलब मैं साले गुद्दी ना आप दूंगा अब चस्का घर आएगी वेपन भी है नहीं हाँ वेपन तो है नहीं भाई अब देखो इट इज फॉर श्योर कि भाई मैं चस्का के लिए पुल करूंगा अब चोंगली के लिए सेव कैसे करूंगा मैं होपफुली मेरा जोंगली के टाइम तक सेव हो जाए भाई होपफुली ट्विच पर देखो जोंगली हेयर आई कम भाई चस्का निकालनी जरूरी है Welcome back, travelers. Welcome back. Okay, let's dive new straight event into the sword. event section. So in the first event, we'll get to learn more about the Masters of the Nightwind. That's right. In the version 5.2 event, Ikitomi Spirit-Seeking Scrolls, travelers will team up with Citlali and Auroron to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to disrupt the ritual. They'll also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth banner reveal if हो they गया हाँ collect हो गया all ना the clues. वही है But don't worry, there are also कोड स्लीप various हो गया है rewards वो to लैब earn होम along में the way, सब छाप including रहे हैं primo jams. अच्छा Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Citlali is performing some kind of ritual. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. Citlali and Auroron have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically a two-person show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Travelers will have to work together to herd the scattered roaming spirits into specific zones to earn points. Pay attention to the conditions on the field if you want a higher score. For example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field. These slabs will break open and release even more spirits. Storms may also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay attention to the direction of the storms. In Evil Banisher, travelers will need to select the right teams to complete the objectives. चलो सही है Completing all of the objectives will award you the Banishing भाई मेरा Aura, which allows you to deal अकाउंट है AoE इसलिए damage by spraying जोंगली paint तो at मेरे को भी enemies. निकालना है That paint really matches the Masters of the Nightwind's aesthetic. जोंगली भी It's बोल रहा है super cool. राइट्स Yeah, and so does the Spirit Loom in restoring fragmented records. Citlali will use her powers to reveal special fragments. चस्का एंड Travelers लिनी will need to piece देन these फिर fragments जोंगली एंड together and नोबिलेट assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something else that we should mention. Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Masters of the Nightwind. अबे सालों It वो looks दिखाओ like ना some है kind क्या of इस ceremonial वेपन में artifact. हेलो I अर्जुन totally भाई agree. Oh, and this event will allow travelers to learn more about Natlan's secrets. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious and legendary place, the Mare Javari. Wow, we've been hearing about this place since Mondstadt. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Active adventurers have been invited to take on the challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to earn rewards. I know you're up to the challenge, Travelers. Good luck! In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics in the region.
and who better to test these tactics than the honorary knight? Be sure to pay close attention to the game, since the format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. Available combat units and stratagems are completely random, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units increases as the wargame progresses. Even more elite monsters will be available for travelers to use. It's a volatile environment, so do your best to win as many rounds as possible, earn wargame medals, and collect the rewards. Alright, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so please take a look. Marjawari, nice, finally. Marjawari hai kya? Ye kaun sa jawari hai? Whoa, it's automated. Cool! The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Artistry. Powerful support cards have been added for nearly every elemental reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid back. Characters will automatically duel each other, and skill animations are now shorter in length. Wow, it's like we got a whole new Genius Invocation TCG after coming back from Natland. Talk about whiplash. TCG kaun khelta hai? That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few updates to regular Genius Invocation TCG. You ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. I feel like Auroran would really shine in this event. He's definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the leyline overflow event will return in version 5.2. चस्का का डैमेज इसलिए मस्त लग रहा है क्योंकि भाई देखना वो जितने भी हैं तुम्हारे उसमें एलिमेंट सबको वो करेगा सबका एक साथ रोल. First up is the change to the Imaginarium theater. ऊपर से वो हो रहा है चार्जेस तो मतलब कि डैमेज भी तो इंक्रीज हो रहा है and have to reopen the Fantasia tome. कुछ रिएक्शंस का. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. So तो इलेक्ट्रो चार्ज रिएक्शन करेगा तो भाई क्या मां क्या होगी? After finishing the battle, all you need to do is click next act if you want to keep fighting. वर्थ इट लग रही है अभी तक तो. Travelers can now ये वेपन वो देखना पड़ेगा उसकी जो उसका जो बिल्ड होगा वो एफपी फ्रेंडली बन सकता है या नहीं बन सकता वो देखना. A supporting caster record has been added in the new update. You can now check which friends have borrowed your supports by looking at the supporting cast screen. Cool. It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium theater will now feature recommended role icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That is so helpful. Zhongli is not real put together a random team if I've just started experimenting with some characters, but this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes! Now we can directly see which elements work best against specific enemies. That's definitely going to save some time. And we can expect even more optimizations in the future as travelers continue to provide valuable feedback about their experiences. Okay, let's introduce the other system optimizations coming in version 5.2. You can now sort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. That's really nice. The dev team designed a lot of intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. Post star या first star? जिसका DPS है या सब DPS है भाई.
You'll be able आर्ले to ही purchase है wood at the Realm Depot in टॉप में exchange for अभी realm सोलो currency. एनिमीज हाँ In हाँ addition, आर्ले the सोलो cooldown for डीपीएस the में boon of the वाइट Elder टॉप में Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it will be easier for travelers to collect wood. Awesome. 4-star है I've been Ororo. meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be really helpful. Nice! I'm so excited for you! Oh, and optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to configure lock No settings PUBG. with a single click. Just hit Use Recommended Settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended ये भी plans to ठीक है। configure custom ones instead. The update also allows you to batch lock artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster to organize your inventory. क्या बात है In ये भी addition, ठीक है a shortcut button that navigates to the lock assistance interface will be added to the artifact domain challenge screen and the artifact acquisition main story screen. 5.3 This है should हाँ make it 5.3 easier में for ही है travelers to configure their locking rules Archon whenever they Quest, want. chapter A star 5, feature will also be added next to the lock button on each artifact. Travelers can use this feature to mark their favorite artifacts and filter by stars to quickly track them down. देखते हैं Finally, treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. A चलो, quick बढ़िया swap है। feature will also be added for treasure compasses and Oculus resonance stones. Enabling this feature will allow travelers to more easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the game. Awesome. Be sure to Damn. check out future announcements for more details on the version 5.2 optimizations. All right, that was a lot of info, so this seems like a good time for our second break. It's time for तो the रहा भाई third redemption भाग code. पे चलो कोई नहीं For थर्ड रिडेम्पशन कोड तो दिन तो इनको मेरे को एक बार ये देखने तो एलिमेंटल हो दिया ना इन्होंने एलिमेंट रिवील कर रहे हैं क्या Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons. Out. तो The भाई elemental filtering हाइड्रो इलेक्ट्रो और अनीमो ठीक है समझ गए Wait! What the I heck? worry that we risk repeating the mistakes. दारू पार्टी का असर है बात तो सही कोड दिखाने ले अरे दिख तो रखा है लिख तो रखा है इन्होंने भाई अपने अपने वो करेक्टर कर लो दे तो दिया है कोड भाई अपने अपने करेक्टर्स बिल्ड कर लेना भाई हाइड्रो Welcome back, travelers. इलेक्ट्रो What else do we have on the agenda, Gabe? और We have अनीमो some very exciting news to share. अबे After आदि the ने version लिखा तो है update on भाई November आदि 20th, देख लो चैट travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin ये हमारे Impact काम on का नहीं है Xbox काम Series X and S consoles यो to सुमेधा receive यो the welcome Wind to the Glider stream. Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. That means that we've reached the end of the special program. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. Chaska and her weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. And Auroran seems like a very layered character. The storytelling is definitely going to shine. What about you? गोली न्यू वेपन्स देखे Yeah, I'm just so excited उनकी for डिटेल्स players to कैसे experience दिखेंगी more of डिटेल्स the तो नहीं दिखाई Natlands इन्होंने storyline. And दिखता we है इसके have बाद so much to explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am. So it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, Nexus I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye.
हो गया क्या? एंड हो गया? ओके 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 एंड 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 बंद हो भाई, मैं तो बस कर। गेम कैप्चर कैमरा, ओके गेम कैप्चर ऑन। चलो गोली भाई, न्यू करेक्टर एंड वेपन दिखा दो। न्यू करेक्टर तो देख वो आएंगे जो चस्का है, चस्का आएगी, लीने आएगी, ठीक है 5.2 के फेज 2 में पहले, फेज 5.2 के फेज 1 में, फेज 2 में है नूवी और जोंगी, सीधी सी बात है। एंड 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 जो नए जो 4 स्टार वेपन है भाई, जो ये दिखाया था वो दिखाया था, उसमें अटैक परसेंटेज है, एंड जो कैटलिस्ट है उसमें ER परसेंटेज है। खास नहीं लगा मेरे को। और ऑन फेज 2 पे दे देते हैं किसी मुलानी वेपन है। मुलानी वेपन तो है, वो HP इंक्रीज करता है। आराम से नायदा निकालूंगा, अभी तो 10 दिन है। चस्का को देखने वेपन के नाम पे भाई देखो, उसका बिल्ड एक बार देखना पड़ेगा मेरे को उसका बिल्ड समझना पड़ेगा। एक बार उसका बिल्ड समझने के बाद देन विल ट्राई फॉर हर। ओए ये बताओ, ये वाली चेस्ट कहाँ है? कोई मेरे को बताओ भाई, ये चेस्ट कहाँ है? इधर ना, ओए इधर ही है नेवर माइंड। चलो चल चस्का और न्यू है। अच्छा हाँ, न्यू कैरेक्टर तो वही है। मेरे को ये भी लेना है यार, काजवा नहीं करो। हाँ ओके, बो को छोड़ के सब कर दिया। फ्लेक्स पे भेजा है, देख क्या स्पार्कलिंग 0 खेलेगा, मस्त गेम है, मजा आ रहा है बहुत। 4 पीस ऑब्सीडियन बिल्ड क्या देखना, ह्यूमन प्ले स्टाइल। अरे उसको रिक्वायरमेंट क्या है, वेपन क्या चाहिए, ER कितना चाहिए, वो सब एक बार वो वाला सीन देख लूं, फिर उसके बाद वो करूंगा। क्या भेजा तूने? अच्छा ये वाला, देखते हैं, इसका भी करेंगे ट्राई। और ऑन 4 स्टार और 5 स्टार। 4 स्टार है यार, 5 स्टार होना चाहिए था उसके प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो वाह भाई, हो गया ना अब लाइव स्ट्रीम। चलो अब मेरा इमेजिनेरियम थिएटर कर दो। कर रहा जा रहा तेरे थिएटर में ही जा रहा हूँ, घुस रहा। 1 मिनट रुक जा बस। Time to go. One with nature. चलो जा रहा भाई मैं। सेकंड लास्ट चैट पर अभी नेक्स्ट बैनर कौन सा आने वाला है बता जरा। स्ट्रीम में नहीं देख पाया, काम कर रहा। लीने चस्का, ठीक है, फिर उसके बाद नूवी और जोंगली। 4 स्टार में सिर्फ ऑरोन का कंफर्मेशन दिया है। गोटी भाई रिव्यू मांगता कि नीच एंड नूवी। रुक जा 1 सेकंड, मैं दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दी। 1 मिनट रुक जा, मैं जा रहा हूँ दूसरे अकाउंट में। ओके ये रहा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अबे हट ना, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके डन। विंडो कैप्चर नहीं किया। I will have order. भाई मैं बोल रहा हूँ इमेजिनेरियम थिएटर कर दो अभी, क्या अभी भाई कितना मांगता।
भाई कर तो रहा हूँ यार, चलोगे जरा काम कर रहा अभी। ये भी ठीक है भाई। थैंक यू फॉर दी 100, बट भाई मैं कर ही रहा था यार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 66 donated 100 rupees through super chat। भाई मैं क्या बोल तुम रहा हूँ इमेजिनेरियम थिएटर कर दो अभी के अभी। भाई कितना मांगना पड़ रहा है भाई? इमेजिनेरियम थिएटर कर दो भाई, ये बोल कैसे रही है? चल देखते हैं देख लेंगे, बट जो होगा वो देखा जाएगा। चल ठीक है, पार्टी सेटअप। चल तेरी वाली ही बेटर होगी, आई बिलीव दैट, बट ये तो इसकी बेटर होगी। ये कौन सा वेपन है? बेस अटैक। डिटेल्स दिखाओ ना मेरे इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा यहाँ से देख सकता हूँ। प्रोटेक्ट ओवर 184 ना, काम नहीं करेगी, ये काम करेगी। और इसका क्या है? कैरेक्टर प्रीव्यू 57 और फिर तो वही ठीक है, यही दे दो। चलो भैया, वी गो 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 गो। हे, एक बंदा हटो, कौन हटेगा? लीजा को हटा देते हैं। स्पोर्टिंग कास्ट क्या ले? तरीका चिंग नहीं, डीलर कब साल C5 दिया। क्या बात कर रहा है? रिव्यू नहीं मिलेगा। अरे रिव्यू करूंगा भाई, सो सॉरी, एक मिनट रुक जा। कीरा रारा बदल लो। हाँ बेटर मेरी ये को। आएगा ही भाई, उसका काम है। He will not stop। भाई क्या ले क्या ही ले सकते हैं हम? नाहिदा नहीं है ना तुम्हारे पास? एक सेकंड, तुम्हारे पास नाहिदा नहीं है? नहीं है? तुम्हारे पास नाहिदा? फिर तो क्या लिया जाए? बताओ भाई, क्या लिया जाए? कौन सा कैरेक्टर ले? कीरा 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 कीरा। अलहितम ले लो। आइडिया अच्छा है। यू आर ए गुड क्वेश्चन। सही तो ले रखा है, ठीक तो है, ले तो रखा है, सही तो है। मैं फिर क्यों नहीं वो कर रहा? चलो तू भी जा, घुस जाओ सब। चलो भैया, या फिर क्लोराइड। C2 नहीं है क्या? C2 नहीं है। ओवरलोड रिएक्शन, फिर से ओवरलोड रिएक्शन देते तो अच्छा रहता। ठीक है, 25 रिफंड हो गए। दया किसी काम की नहीं है। ओवरलोड रिएक्शन फिर करते हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो। कंज्यूम ऑल वन रैंडम विल ज्वाइन बट आफ्टर दिस। देना तू, करवा ज्वाइन। किसको ज्वाइन करवा रहा है? ला भाई, ओवरलोड रिएक्शन। अब और नहीं कर सकता मैं। चलो भाई, अब चलते हैं। लेट्स डू दिस। कहाँ घुस जाओ? थिएटर में? वैसे ये बताओ, ट्रिपल एन की क्या फुल फॉर्म फॉलो कर रहे हो तुम लोग? अगर कोई फॉलो कर रहा है तो पकड़ के पेला दी साले को। गाली देता भाई यार, मतलब इतना क्या कर रहा था? गाली देता। बोलता है साले तो वही है ना, वही नॉन स्टॉप वाला। C2 नहीं है। हाँ अच्छा, नॉन स्टॉप।
मेरे को लगा 9 बार नट 9 पर। Emerge right now. Emerge. Right now, a sight to behold. Right here. Ducky, ducky, go! इजी है यार। गोली भाई क्या हाल है? गारा, वेलकम गारा भाई, वेलकम वेलकम टू दिस स्ट्रीम ब्रदर। क्या हाल है भाई के? नो 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 नट नो लेट भाई, नहाना नवंबर भाई। ये तो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ आपके के लिए। वुल्फ एक मंथ नो भी यूज नहीं करोगे। तू आजा दिल्ली गाली दे देना। मेरे को वो बता कौन से मेरे को डीएम करियो यहाँ मत बताइयो। अपना भाई, अपना भी सेक्सी ब्रदर। वो कहाँ है जहरीला? दिख नहीं राज। वुल्फ एक मंथ नाइस। 9 नोवी नवंबर। किसके ऊपर मूतना नहीं है क्या ये 9 नोवी नवंबर यूज करके? मतलब क्या क्या सीन है भाई? ढंग का भी नहीं है क्या? आजा भाई, तू ही आजा। तेरे ऊपर ही ओवरलोड मार कुत्ता। ये कौन सा नवंबर फॉलो कर रहा है तू? ये वाला बहुत गलत नवंबर फॉलो कर रहा है भाई। Right now, emerge. मरो सालो जल्दी। Nothing lasts forever. Right here. Right now. Emerge. चलो भाई मर जा, हो गया ना। साले ने फिर भी बच्ची को मारा भाई। रुक भाई, यो का चल रही है चैट में भाई, यही चलता रहता है। चैट अलग नशे में रहती है। नवंबर में नोवी यूज नहीं करना है। क्ली हिल देती है, अबे वो देती है ये डोरी स्कैमर। डोरी झारखंड से है क्या? झारखंड में होते थे ना वो स्कैम्स वगैरह। इलेक्ट्रो कंपेनियन चाहिए मेरे को, दे भाई। मैं रेडन ही ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। कंपेनियन रैंडम और नहीं ले रहा मैं ये ले लेता हूँ। ये वाला भी कुछ काम ही आएगा मेरे। कंज्यूम ऑल ओड्स, गेन 2 चांसेस आफ्टर सेलेक्टिंग दिस कंपेनियंस नॉट विल गो। तो दे दे भाई, ये दे दे, खुश रह। वन ऑफ द सेलेक्टेबल इवेंट्स ले भाई, तू वापिस वो कर दे। बराबर कर दिया, हो गया खुश साले। सेम बट डिफरेंट है, ऐसा है क्या? हाँ, वो डोरी स्कैमर हील नहीं, ये बोल रहा ना? ऐसा ही कुछ था ना भाई। मेरी जान पे लेते पहले, मेरे पे वो बिल्ड नहीं है। अरे कोई नहीं, फिर लाइक अब तो आगे डीपीएस ही यूज करूंगा मैं। अभी तो डीपीएस बहुत बचे हैं। देखो तो सही, अलीतम बचा हुआ है, ये बची हुई है, ये बची हुई है, ये आनी बाकी है अभी तो। और टोटल 10 ही तो हैं वो सब। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इजी है, इजी। अरे पहले ये करना था।
पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। I'll settle this. I hear everything. Bury me. Inazuma shines eternal. मैं पता नहीं ये क्यों कर रहा हूँ, ये वाली हरकतें क्यों की है मैंने, आई डोंट नो, बट मैं कर रहा हूँ। अब मैं इसमें घुस चुका हूँ तो मैं अब ये करूँगा। I'll uproot you. One with the forest. Yeah. There is no escape. Dead with me. Torn to oblivion. मत तो भागना। Can't see. Let's nip that in. Our bond is strong. Out of भाई मर जियो यार। Inazuma shines eternal. रेडन मार, जल्दी मार, जल्दी जल्दी जल्दी। हे भगवान, टट्टी हग दी, 1 सेकंड से हग दी, हग दी। झारखंड में स्कैम्स, हाँ झारखंड से स्कैम्स चलते थे ना, जकार्ता करके कुछ जगह थी वहां से। आई एम बैक, वेलकम बैक। जियो ट्रैवलर ई 2 times प्लस जोंगली ई 1 time, नोवी चार्ज अटैक, आर्ट ऑफ कल्चर। कर रखा वो वाला सीन भी कर रहा था। हाँ वो बोल रहा था प्रणव को ही पता है, वीसी आ जाना, फ्री होगा तो बता दे। आजा वीसी आजा, मैं अभी भी बैठा हूँ झारखंड में। टट्टी कर दी भैया, अरे कर दिया था भाई, मैं बस इधर उधर हट दिया थोड़ा सा। एक तो ये चार्ज अटैक बहुत डिले कर रहा है मेरा। Now you shall perish. I'll uproot you. Get with me. There is no escape. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Lightning terrified. Can't see. I hear everything. बोला था पिछली बार हग दिया, इस बार देख रहा है कितनी इजी हुआ है। ए अभी भी हगेगा क्या साले? हो गया, इजी था। अरे जकार्ता नहीं, कुछ तो था, सॉरी कुछ तो था, सॉरी जकार्ता नहीं, कुछ और था यार, कुछ तो था। इसके ऊपर सीरीज भी वगैरह भी बन रखी है यार, कुछ तो था। हेलो 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 हेलो, वाह 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 वाह, वो फ्री नहीं है। अच्छा कोई नहीं, फिर बता दियो जब तो बता दूँ भाई। मैं दुकान में क्या ला रहा है? ओके अरे मतलब भाई कुछ तो था, ओम तारा थी या कुछ तो था, ऐसा ही कुछ करके नाम था, मतलब अजीब सा नाम। मॉर्निंग विश नहीं करेगा? गुड नाइट विश कर दूं साले? भाई मेरे को जल्दी जल्दी करना होगा। Ready for trial. दे भाई क्या देगा? सिलेक्टेबल बनूंगा। चलो ले लाइन प्रोटेक्शन वाला इजी हो जाएगा। एक बात बताओ यार, सब सुनो सब लोग, एक बात बताओ, बोलो ये हाइकू टम्पस्टर बैटल कहाँ मिलेगा देखने को? मेरे को मिल ही नहीं रहा। ये है क्या? सर्जन की मॉर्निंग इस टाइम ही होती है? तू साले सर्जन है, तू तो हड्डी का डॉक्टर नहीं था, मतलब कि लोगों को बताता था कि भाई ये हड्डी फ्रैक्चर हो रखी है, इसको किसी अच्छे सर्जन से वो करवाओ।
ऐसा कुछ सीना तो कोई लिंक ढूंढवा सकता है। तोता बोले टे टे टे, तो बकरी बोले तोता, तोता बोले तोता बोल रहा था मैं। भाई क्या नशे कर रखे हैं मैंने। मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। चलो बर्निंग में यूज करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो ना। ना भाई तू सिर्फ हड्डी देखता है भाई, लाइक हाँ भाई तेरी हड्डी में कुछ तो डिफेक्ट है, तू साले सर्जन वर्जन नहीं है, ये झूठ मत बोल। One with the force. Yeah. I'll uproot you. Invisible evidence! Ha! Ja! Let's get it on! Hi! Let's nip that in the bud. बता भाई कहाँ कहाँ मिला था? Keep up. Yeah. Can't see. I'll uproot you. And shroud. कौन सा? Delivery! Buckle up! Incinerate! क्या बात है, कहाँ था? हाँ हाँ अबे किस मेट्रो स्टेशन उतरा था वो बता ना। अच्छा नहीं, ठीक है समझ गया, सही है, पकड़ा गया। अरे वो एड्रेस नहीं बता रहा था अपना, आ गया अब। है कौन से में रहता बता ना। Let's nip that in the bud. बस क्या Let me check real quick। आ गया बैटल ऑफ कर्पेज डंप के नाम से। हाँ लेकिन शायद इंडिया में नहीं आया है। ओए ये हाई की प्रांजल देखियो, ये हा की यू जो भी है ऊपर चैट देख, रुक जा देखता। सॉरी कुछ और वो आ गया था यार। क्या तेरी चैट? सुमेधा की चैट देखियो। सुमेधा कोई तो मूवी की बात कर रही है, उसका पता है क्या तेरे को ना? मतलब कभी कभी कर लेते हैं सीरियस सीनियर्स को असिस्ट सर्जरी में। हाँ तो ये बोलना साले सीनियर्स को असिस्ट करता हूँ, ये मत बोलना कि भाई मैं सर्जन हूँ। साले हैं तेज बन रहा है। ये बोला हाक्यू अरे कुछ तो है यार ऐसा कुछ। बता। हाँ वही तो क्यू जो भी है। सुमेधा वो तुम्हें टैग कर देगा, वो चेक कर लेना। प्रांजल टैग कर देगा। ओए यूआईडी दे जल्दी दे रिहान। रिहान भाई जल्दी। 22-25 एड्रेस तो नहीं बताया ना उसने। ओए एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं बताया ना उसने। ठीक है कोई नहीं, अब तो पकड़ा जाए।
साले उनसे तो बेइज्जती मत कर। तेरे को कौन जानता है, तेरे को कुत्ता नहीं जानता भैया, नीरज भाई। साला बोल रहा भाई बेइज्जती मत कर। किसको पता है कि तू भाई अपने आप को ऑर्थो सर्जन बताता है बट तू ऑर्थो सर्जन नहीं है तू। बट उसका 2 दिन की क्लास है। मेरे को पता है, मेरे को पता है। हेलो आरसी भाई, वेलकम टू दिस स्ट्रीम ब्रदर। क्या हाल है भाई की? उसकी हाँ, बैटल ऑफ द गार्बेज ड्रम पैसा ही करके पूछा। अबे हद है भाई, मैंने ये थोड़ी बोला है कि भाई जो ये अपने आप को ऐसा बोल रहा है उसका नाम नीरज है, वो खुद को सर्जन बताता है। और तो सर्जन बताता है भाई। कौन बोल रहा है भाई? कोई जानता है? कोई जानता है भाई नीरज को, जो बोलता है कि भाई मैं ऑर्थो सर्जन हूँ बट वो सर्जन नहीं है, बस ऐसे ही बोलता है। देखा, कोई नहीं जानता भाई, कोई नहीं जानता। साला नाराज भाई, कोई नीरज को नहीं जानता भाई। चलो भाई खत्म कर दो इमेजिनेरियम थिएटर। हाँ कर रहा जल्दी कर रहा। 2 के अटैक है, 53 ओवर 243 है। सही तो है, मस्त कर दिया। बस इसका वो करना, टैलेंट क्राउन कर। ये ई के ऊपर फोकस कर बस, बाकी सब सही है। 41 के एचपी, 33 ओवर 253। हाइड्रो डैमेज बोनस नहीं है, 53 ठीक है। प्रोटोटाइप एम्बर के साथ भाई बिल्ड बढ़िया है, 33 ओवर 253 सही है। बट थोड़ा सा क्रिट रेट इंक्रीज कर सकता है, क्रिट डैमेज कम करके। नीरज कौन है? वही तो देखा, नीरज है कौन? हम तो सिर्फ नीरज चोपड़ा को भाग गया नीरज भाई। हेलो, जिंदा है? हो जाएगा। हाँ कर रहा जल्दी कर रहा, एक बार बस ये रिव्यू कंप्लीट कर। इसमें थोड़ा क्रिट रेट वो करना इंक्रीज, 40 प्लस रख इस पे। प्रोटोटाइप पे क्या दे रखा है तूने? क्रिट डैमेज सर्कुलेट दे रखा है ना, क्रिट रेट कम कहाँ है? वाह वाह, साले चेंज कर इसको। डिफेंस भर रखा है इतना। मूवी का फ्लावर चेक कर। कुत्ते 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 कुत्ते। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा वापिस, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं नहीं जाऊंगा भाई। अरे हद है भाई, साला इतनी लेफ्ट बोल रहा है कुत्ता। मैं जानता, नीरज को जानता हूँ, एक अमीर लौंडा है, बस 2 आईफोन, एक सैमसंग गैलेक्सी के साथ। नाराज हो गया भाई, अब तो नाराज होके जा चुका है। He is gone। भाई ट्रेवलर पे आर्टिफैक्ट ही नहीं है। कोई नहीं, फिर क्या क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? टेंशन क्यों ले रहा है? स्पीकर नोट, हमको जरूरत ही नहीं है उसकी। ए, कौन से उस पे हूँ? एक्ट 5 पे हूँ। अभी कितने डीपीएस बचे हैं मेरे पास? एक बार अलीतम मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बचा लेता हूँ तो ठीक है, कुकी बचा लेता हूँ, रेडन यूज कर लेते हैं। आगे बहुत पड़े हैं यार कैरेक्टर्स। एक बस एजेंस सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए ले जाते हैं। Here you are. Lucky day. Let's get down to business. Boom. The light blade. Now you shall perish. Scatter. How's this? Lucky day. Fall before me. Say no more. Let's get down to business. How's this?
मर मत जाइयो साले, मर मत जाइयो। I need more time. Inazuma shines eternal. Absurd. Shine down. Let's get it on. Ha! Gloves off. Now you shall perish. फाइनली हो गया, चलो कोई नहीं, मुझे ट्रैवलर बिल्ड करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है तो ऐसे भी हो जाएगा। वाइस वो क्या नाम है, ये जो भी है, कौन सा मोड होता है ये, वाइसेज मोड करके जो भी है, जो भी आखिरी वाला है, उसके लिए करने के लिए करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम, रैंडम आर्टिफैक्ट्स दिया हूँ, डीपीएस बिल्ड डेंड्रो ट्रैवलर स्वॉर्ड काजवा स्टोरी वाला स्वॉर्ड। ट्रैवलर कुछ काम का है नहीं, बस ऐसे ही है। ईसीन ब्लेड, हाँ ईसीन करके ही वो ब्लेड है ना, उस वाला तो दे दे भाई रैंडम, पकड़ा दे पकड़ा दे पकड़ा दे पकड़ा दे, ये दे दे मेरे को। किस बात का जस्टिस देगा तू? ये और ऑन C0 पे कैसा है प्ले स्टाइल एटसेट्रा? प्ले स्टाइल तो आई गेस सेम ही रहेगा ना, कौन्स के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मेरे को अभी एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है कि मैं क्या लेके जाऊं, क्या 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 इस पे एलिथम वर्क करेगा? आई मीन उसकी यूजेस का तो देखो अभी तक कुछ भी नहीं पता है, मैं खुद लीक्स वगैरह से दूर हूँ अभी मैंने इतना नहीं देखा, बट हाँ I'll चेक, बताता हूँ। टाई 9 months में फुटबॉल स्टेडियम के लिए 11 प्लेयर बीबी के पेट से निकालो। भाई तेरी बीवी को भेज दे, फिर देखते हैं उसके पेट में 11 बच्चे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, फिर बात करते हैं, बराबर करेगा। ठीक है, मुझे वो स्वॉर्ड पसंद है इसलिए उसको दिया, बिकॉज ट्रैवलर हम खुद होते हैं। गेम से कुछ ज्यादा कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मतलब लाइक कुछ चलो देखते हैं। अलीतम सिंह टू अब तो मैं घुस गया ऐसे ही। Motion to compel. Breath of the flame. A bond is drawn. Out of my way. A process of elimination. Flicker. Stand with me. इतना इजी था अलीतम के साथ, निकाल दिए हैं मैंने तो। Damn. तो भाई फिर उसको बीवी नहीं भाई, तो उसको कुछ और ही बोल। साले पागल है, 9 महीने में क्या रहा, कुछ भी, मतलब कुछ भी। I want to use the Asian sword, that's why I travel 50. हैं? भाई उसकी चैट देखो ना, वो क्या बोल रहा है। लीजा पे आर्टिफैक्ट्स नहीं है। लीजा भाई, तूने लीजा बोला, उसने बोला आर्टिफैक्ट्स नहीं है। ये ठीक है भाई, तो भाई किस पे आर्टिफैक्ट्स? बाकी कोई नहीं, जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी हुतावरन करने वाला हूँ। हुतावरन हो गया नेक्स्ट टू उसमें, नेक्स्ट टू हुता हो रही है।
क्योंकि अब फिर उसके बाद होगी आर्ले आयुष। साले हराम जाते, मिल गया टाइम है, निकल गया टाइम, सोचा साले किसके साथ। अरे ये खत्म करके जा रहा हूँ बस, मेरे को भी कुछ काम था, तो बस भाई शॉप बंद ना हो। आगामिंग पे ठीक है, मैं पता नहीं क्यों ले रहा हूँ ये, बट ठीक है। Oz, reveal thyself. Shadow Raiden. Let me weave you a verse. Know my sword. ये साला ऊपर किससे पूछ के चढ़ा है? By royal, know my sword. Rain cutter. As you wish, maid Fräulein. Let me weave you a verse. Know my sword. Time to go. Many happy returns. हग दिया साला। पता नहीं भाई, मुझे ये उड़ती पतंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। साला वो उड़ा कैसे है ये नहीं समझ में आया मेरे को। कुछ अच्छा आ रहा है भाई, वो है ना क्या वो चस्का है ना, बस बेकार पैच एक्सेप्ट क्वेस्ट और न्यू रीजन। भाई साले वो चस्का मस्त तो लग रही है। देख अब भी इसके लिए मेरे को तो लग रहा है भाई आगे वाले अब इसके लिए वो रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। Reveal thyself. साले नीचे उतर जा, Insubordination. माँ का बच्चा। न्यू रीजन भी आ रहा है। हाँ, तीन न्यू रीजन आ रहे हैं। एक तो नाइट किंगडम वाला जो भी है वो आ रहा है, फिर फेदर फ्लावर फेदर। Mighty mythical beast. Rain cutter. Oz, reveal. Hey, what gives? Witness the power of Guwa. Know my sword. Rain outlines your fate. Higher, higher, hands on fire. Wings of darkness. Up to it, Monsai. Let me weave you a verse. फिर 2 सेकंड लेट। भाई ये मेरे उताव काम नहीं करती क्या? ये क्या चीज है? रिक्वायरमेंट नहीं होती। डैम दैट्स फन। और अच्छा है। डैमेज आउटपुट C0 पर 1 मिलियन प्लस है। वही तो चस्का भाई, चस्का लगने वाला है। चलिए और वो करेक्टर नहीं है। और फेज 2 में आता तो अच्छा होता। और 1-2 टेंपुल में आ जाए तो मजे। मैं फिर सेव करके 9 पुल करूँ। आई एम एट 52 PT तो 2 टेंपुल करूंगी। आ गया मस्त, नहीं आया तो अगर चस्का आ गई पहले ही पुल में तो
What if you get a चस्का in the very first pull? तो फिर क्या करोगे? फिर क्या ही कर पाएंगे? By royal decree. वो साला ऊपर उड़ रहा है फिर जिसका कुछ कुत्ता इतनी गंदी बातें करते हुए तेरे को शर्म नहीं आती? Rain cutter, know my sword. Rain outlines your fate. Go! See? Go! By royal decree. Witness the power of Giveaaway. Let me read you a verse. साले नीचे उतर जा। Time to go. Midnight mighty mythical beast. मेरे पास 170 पल है, मुझे हाइड्रो ड्रैगन और चस्का मिलेगी क्या? चांसेस हैं, अगर दोनों 50 विन कर गया तो इजी है, मिल जाएगा। मैं 20-25 पुल करूंगा चस्का पे, और आते ही पुल बंद। मेरा लकी लेने मेरे को उसकी मम्मी के बैनर पे अर्ली मिल गया था। अगर क्लोराइड होती तो और What F भाई, क्या चीज है ये? बोलो। हो जाए यार जल्दी, क्यों परेशान कर रहा है? Stop it now. Rain cutter, rain outlines your fate. Know my soul. Huh? Wings of dark. Let me read you a verse. Rain outlines your fate. अबे अब किस बात का मेला है? नीचे उतर जा, तेरी बुआ की शादी चल रही है ऊपर। Midnight Venta. Many happy returns. Let me read you a verse. माफ कर। गोली मेरा करंट से 10,100 मैं देखता। पिछल उसको नीचे गिराना लेस किल इशू। एक ही तो बेचारा मेल और मेल करेक्टर है पूरे रीजन में, उसको 4 स्टार बना दिया। ईफा है अभी बाकी। आई कांट वेट फॉर ईफा। ये कौन है? ईफा भी प्लेबल होगा जिस तरह लग रहा है इन फ्यूचर। अबे ईफा है कौन? मेरे से एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं होती? मेरे से क्या पूछ रहा है साले? मेरे से कौन सी हो रही है? मेरे पास दो एरियाज के वो हैं ट्रेजर कंपास, बट मैं स्टिल क्या कर रहा हूँ?
एक एरिया 100 नहीं करा मैंने अभी तक, जिन 2 एरिया की वो है मेरे पास। एक तो साला इधर उधर घूम क्यों रहा है, तेरी बुआ की शादी चल रही है। No, my sword. Rain outlines your fate. Let me. कर रहा है, शुक्र है हो गया। सिर्फ वॉइस रिवील हुई थी, इफ आर्कन क्वेस्ट में था। चल देखता हूँ इसका, मैं देखता हूँ आज तो नहीं है, मतलब जल्दी आर्कन क्वेस्ट भी करनी है। हाँ यार, मेरे पास कंपास होता तो सब 100% कर दूं। इसलिए बोलता हूँ आर्कन क्वेस्ट करो, स्किप नहीं। अबे साले आर्कन क्वेस्ट कर ही ना है, स्किप घंटा कर दी मैंने कर ही ना है, साला करने तो दे। ईफास इटाली मावी का मैडम पिंक, सो लेट्स सी वो भी आएगा। और रोरन जब मेमोरीज देख रहा था तब वो बात हुई थी, इसलिए बोल रहा था। इनाजुमा की मैं मेन आइलैंड छोड़ के सब 30-40% है। भाई मैंने इनाजुमा ऑलमोस्ट 90 अबव कर दिया, सब जगह का ऑलमोस्ट। An insurmountable problem, I presume. हैं इतने पॉइंट्स हैं साले, इतने पॉइंट्स हैं तेरे पास। मेरा भी अभी सेकंड पार्ट रहता है आर्कन क्वेस्ट का, आज या कल करूंगी। डे 1 पे ही क्वेस्ट करो तू है, मतलब मैं क्यों करूं यार। लाइक अभी देख, अभी जब नया वो आएगा आर्कन क्वेस्ट, उस टाइम का वो था, बट चलो अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। बाहर निकल जल्दी बाहर निकल जल्दी। बन लिया तेज है, निकल गई हवा। और उछल ले ना, और उछल ले, उछलना और हैं साले, और उछल लेगा। आओ वेलकम टू द स्ट्रीम। ये है उसका वुल्फ का, लोन वुल्फ का। मेरा हर एक स्टोरी मोड खत्म हो गया और प्रीमो जेम्स के लिए क्या करूं? एक्सप्लोरेशन 100 है। एक्सप्लोरेशन कितना भाई? पीके लॉन्च भाई कृपया वो बताएं। डे 1 करेगा तो सब मालूम हो रहेगा। हमने लगाया नहीं, फिर दिख नहीं रहा, तुझे नहीं दिख रहा होगा। मैं भी हट जाता है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं क्या करूं प्रीमोज के लिए? देखा आयुष ने सही बोला, डिस्क्रिप्शन चेक करो। एकदम सही बात बोली है भाई, डिस्क्रिप्शन चेक करो अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है तो। अबे
ये हो गया, ये Hear the echoes of the valley. There's more! Nowhere to hide. Witness the power of Gugwa. Know my sword. It's over! I will have order! How's this? More! Letting grave names echo. Incoming. I'm ready! Rain cutter. ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके Cut to the chase. Don't blink. Rain outlines your fate. See no more! Witness the power of Gugwa. There's more! Boom! It's over! Take this! क्या होगा है? यप, बस पे आउट के टाइम गोली का यूपीआई आईडी तेरी माँ की आँख। 2 महीने पुराना अकाउंट है, पहले 3 रीजन 100%, बाकी 70-60%। बस भाई वो करना। अबे हुताओ पे ये क्या वेपन है, मेरे को भी नहीं पता क्या वेपन है। प्रॉब्लम ये है कि मैं थिएटर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास करैक्टर नहीं है। 2 महीने पुराने अकाउंट में तो भाई करैक्टर होंगे भी नहीं। मेरा एक्सप्लोर नेम नाम का न्यू अभी स्टोरेज में है, पर लेजीनेस उसको यूज ना करने देता। तो साले तेरे पास इतनी सेविंग कैसे हुई 10,000 की साले? पहले 2 रीजन में प्रीमो नहीं है। बताओ पे अटैक वेपन। मैं एक तो है ना ये बिल्ड नहीं चेक करता ना, वो गलत चीज है मेरी। Let me try my Many happy return. Incoming. Hey, nowhere to hide. Rain cutter. Rain outlines your fate. Know my sword. my blade! जिसको मारना उसको मारना। एक तो इसकी है ना हुताओ की है ना एमिंग बड़ी बेकार है। साला जिसको मारना उसको नहीं मारेगी, बाकी सबको मार देगी। I'm ready! See no more! There's more! Don't blink. Rain outlines your fate. Witness it. Go. I'm ready! आधे से ज्यादा टाइम ले लिया इसने एक एनिमी को मारते हुए। Up to it, Monzo. With sword comes shadow. Time to act. Know my sword. Let me weave you a verse. Now I regret doing this thing. Higher, higher, dance on fire. ही कमिंग क्यों वेस्ट? पहले तो क्या करूं, चलाने वाला भी बेकार ही है। मैं तो बोलता ही हूँ मेरे को नहीं आती। मैं कौन सा बोल रहा हूँ भाई, ना भाई मेरे से आती है, मेरे को चलानी आती है, बट ये चलती नहीं है। Nowhere to hide. There's more! Many happy returns. And you! Rain cutter. Rain outlines your fate. एक मिनट। अरे मरचा। Cross over. Don't blink. Hey. And over! I'm ready! Rain outlines your fate. Let me weave you
you a verse. With sword comes shadow. Let's get down to business. My blade. हाँ इसको ही मारती रही हो, इसको मारती रही हो, उसको जिसको मारना उसको मत मारियो साली। Incoming. Up to it, Monzai. वेब करूं गामिंग से, ये बोल रहा है गामिंग वेब, गामिंग वेब ट्राई करो। चलो गामिंग से ट्राई करते हैं। Witness the power of Giveaaway. Rain outlines your face. Know my sword. Many happy returns. This will do. More. Cheap shots. Let me weave you a verse. Alley-oop. Get over. Take this. See no more. Let me try my Time to go. Bring it. Lucky day. Rain cutter. fall before Tiny me. mythical beast. My blade. It's over. वुल्फ लॉन वुल्फ। यार क्या करूं मैं फिर? My lucky day. Make yourself at home. I see everything. Let me weave you a verse. Know my sword. Rain outline. Stay put. Ready? Go! Speed of light. Good. Cut to the chase. Incoming. What's next? Hey! Let's get down to business. Witness the power of Giveaaway. जल्दी आना। You blade. My blade. Don't blink. Nowhere to hide. Grow. The Temple of Wisdom. This place hurt a little. My lucky day. Incoming. Grow. Let me weave you a verse. Know my sword. Let's get down to business. Don't blink. Cut to the chase. सोचा नहीं था भाई, मैं सोचा नहीं था ये वाला काम करेगा, ये चीज काम करेगी भाई। अगर कर रहा है भाई टीम। This place hurt a little. I see everything. भाई साहब ये काम कर गया। गामिंग होता हो काम नहीं करे, ये दो नल्ले काम कर गए भाई। आउट 5 बेस्ट जीपीएस है नहीं तूने बफ लिए भाई, बफ लिए थे मैंने, बफ ले रखे थे ओवरलोड के, फिर भी अल्लाह किसको बोल रहा। जिसको सोचना उसको बोल रहा हूँ, जिसको तू सोच रहा उसी को बोल रहा हूँ। अब बोल।
With you all the way. कोचिंग नल्ली है ना, एक और नल्ली थी उसमें पहले वाली टीम में। मेरा एक सवाल था थिएटर में, तुम किसी के करेक्टर ले सकते हो, एक करेक्टर ले सकते हो, C6 और C0 से। बात तो देख सही है, C6 हो ये नल्ली C6 हो या C0 हो, बात तो सेम ही है, खास फर्क है नहीं। 100-200 के ही मैक्सिमम मार सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ बस का है नहीं। टट्टी है एकदम टट्टी, लाइक एकदम सही है। डोंट हैव Roll. Commit it to memory. Make yourselves at home. Everybody stand back. Quiver! No turning back! Go on! Oh. Late bear. Witness my rise. Transfix. This plays pretty delivered. Again. I'm going in. What the F? ये क्यों नहीं मार रही आर्ले? आर्ले को नशे चढ़े हैं क्या? Late bear. That's gonna hurt in the morning. Flash. ये आर्ले को नशे हो गए क्या? Sting तब as the moon. ये आर्ले मार क्यों नहीं रही? मैं तुमको सोच रहा था नहीं उताव का C0 और C6 में 12% डैमेज है। मी बैक एलेक्स एग्जाम प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में गया था 10 सेकंड लोल। भाई ये मार क्यों नहीं रही आर्ले? आर्ले का इतना डैमेज लो क्यों है? आर्ले का भी बिल्ड बिगाड़ रखा है क्या इसने? 74 ओवर 2 ठीक तो है। मैं एक काम करता हूँ, हाँ सिलोनेंट निकाला है। अब याद आया मेरे को सिलोनेंट किया। Let the mountain's veins boil. Pitiful. Overruled. This is where you fall. Commit it to memory. Everybody stand back. Hear the echoes of the valley. मार जल्दी जल्दी मार आर्ले, जल्दी जल्दी मार, जल्दी जल्दी मार। कुत्ता बना दे इसको, कुत्ता बना दे, कुत्ता 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 कुत्ता। Teamwork is dreamwork. 14 seconds, 14 seconds left, 10 seconds. टीम करते करते काम करते 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 यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। Witness my rise. हगदी 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 नल्ली। Bye.